Hello students. Today we are learn about the new topic. The name of this topic is light, sound and force. In this topic we are learn about the light, what is the difference between the sounds, which is the types of the sounds and what is mean by force and the friction. So let's start. So student, we are learn about the light. So what is mean by light? So we are give one example. If I said search your pencil box in a dark room, can it is possible to you to search a pencil box in a dark room? No, because of we need a light to see the things. So we cannot see anything around us without a light. So what is meant by light exactly? So light is the form of energy. So which things are gives us a light? There are the two types of lights, that is the luminous object and the non-luminous object. So what is meant by luminous object? So luminous object means द ऑब्जेक्ट दैट गिव्स अस अ लाइट, कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमें लाइट्स देते हैं उनको लिमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं. एंड एग्जैक्टली अपोजिट नॉन लिमिनियस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दैट डोंट गिव्स अस अ लाइट, कि जो ऑब्जेक्ट है हमें लाइट नहीं देते उनको नॉन लिमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं. सो विच आर द एग्जाम्पल ऑफ द लिमिनियस ऑब्जेक्ट? यस, सन, स्टार्स, टॉर्च, कैंडल, बल्ब, मोबाइल टॉर्च. These are the example of the luminous object. And non-luminous object, exactly the things that don't gives us a light, like a tree, table, chair and all these things, they are not gives us a light, is called a non-luminous object. So these are the differences between luminous and non-luminous object. Okay, so sun is the, you know that sun is the main source of light. सबसे पहले मेन सोर्स कौन सा आता है लाइट्स का, तो वो है सन. Sun is the main source of light, and other things like that, the bulb, torch and everything are the man-made things, and sun is the natural thing. So he is the main source of light. So in this video, in this slide, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि there are the two sources of light, that is the natural sources and the man-made sources. So natural कौन सा है, sun and star, and मैनमेड कौन सा है कि जो भी चीज़ें हैं जो इंसान ने बनाई है. फॉर एग्जांपल टॉर्च, बल्ब, लाइट, फायर, मोबाइल टॉर्च एंड एवरीथिंग, कैंडल इज ऑल्सो. दीज आर द मैन मेड थिंग्स. So that our next point is a shadow. So what is mean by shadow exactly? So with the help of this ball we are explain what is mean by shadow. सो आपको यहाँ पे एक बॉल दिख रहा है, नीचे उसकी ब्लैक शैडो दिख रही है, ऊपर एक टॉर्च है, उस टॉर्च से क्या आ रहा है, एक लाइट आ रहा है. सो इन नेक्स्ट स्लाइड वी आर एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट इज मीन बाय एग्जैक्टली shadow and what is the definition of shadow. So you know that light is a travel in a straight line also. Can you see that light travel in a zigzag pattern? No, light is always travel in a स्ट्रेट लाइन. तो लाइट कंटिन्यूसली कैसे स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है. तो आपको यहाँ पे बॉल दिख रहा है, उसको नीचे यहाँ पे ब्लैक शैडो दिख रही है, दिस इज कॉल्ड अ शैडो. बट व्हाट इज मीन बाय एग्जैक्टली डेफिनेशन ऑफ द शैडो, कि शैडो की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो अब हम देखते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो स्टूडेंट, व्हाट इज मीन बाय शैडो? अ शैडो इज व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ द लाइट, द लाइट इज अ ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड अ शैडो. मतलब कि कोई एक लाइट का सोर्स है, उस सोर्स से लाइट आ रहा है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे दिखाया गया है ट्री, ऊपर से सोर्स ऑफ लाइट है सन, सन से यहाँ पे लाइट पड़ रहा है किसके ऊपर,
ज़मीन के ऊपर पड़ रहा है, एक्चुअली ज़मीन के ऊपर पड़ रहा है, बट बीच में हमने उसको ट्री लगाया है, तो ज़मीन और लाइट इन दोनों के बीच में कौन आया डिस्टर्बेंस के लिए? ट्री आया, एग्जैक्टली। सो ट्री आया तो ट्री ने उस पर डिस्टर्बेंस पैदा किया, तो उसका ट्री का नीचे क्या गिर गया? ज़मीन पे शैडो। सो व्हाट इज मीन बाय शैडो? शैडो मीन्स व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है सन एंड इट इज़ ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब नीचे दिए गए ज़मीन के ऊपर वो जो ट्री है उसने वो लाइट को क्या किया है? ब्लॉक किया है, तो इसकी वजह से नीचे पड़ गई है शैडो। सो इट इज़ अ शैडो एंड यू नो दैट शैडो इज़ ऑलवेज अ ब्लैक। अब आप भी देखो, आप भी सन के नीचे ज़मीन के ऊपर खड़े रहे तो आपके नीचे शैडो पड़ेगी और इट इज़ ऑलवेज अ ब्लैक। नाउ इट इज़ अ स्मॉलर एंड बिगर। शैडो कैसे होती है? छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। अब हम देखेंगे कि शैडो छोटी कब होती है और बड़ी कब होती है। सो इन अ मॉर्निंग सेक्शन, अब हम मॉर्निंग को जब देखेंगे, आवर शैडो इज़ वेरी लॉन्ग, सब तब आपकी शैडो कैसी हो जाएगी? बहुत बड़ी दिखेगी। इन आफ्टरनून टाइम, जैसे कि सन एकदम सा आपके सर के ऊपर है, तो आपकी शैडो पड़ेगी छोटी, इट्स अ स्मॉलर। एंड इन अ इवनिंग टाइम फिर से सन डाउन हो जाएगा, तब आपकी शैडो पड़ेगी बहुत लंबी। ये आप टॉर्च से भी कर सकते हैं। एक छोटी सी स्टिक खड़ी करके आप सोर्स ऑफ लाइट के लिए टॉर्च यूज़ करके उसको ऐसे राउंड शेप में घुमा कर देख सकते हैं कि शैडो कैसी कम ज़्यादा होती है। दिस इज एन एक्टिविटी, आप ये भी करके देख सकते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अ साउंड। So what is meant by sound exactly? So students, we are very familiar with sound. From our childhood, we are listening all types of sounds like a bird sound, barking dog sounds, ringing a doorbell, music, and also crying a children. So ये सब साउंड्स हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. इट इज़ कॉल्ड अ साउंड. इसको हम क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं. लाफिंग साउंड इज ऑल्सो, क्राइंग साउंड ऑल्सो. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साउंड्स. ये सब क्या है? साउंड्स हैं. ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं. सो देयर आर ऑल्सो अ डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स ऑल्सो. अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स कैसे होते हैं. सो the pleasant sounds and the unpleasant sounds, these are the two types of sounds. So what is meant by pleasant sounds? So we are listening a beautiful small silent music, it is called a pleasant sound. अगर हमने कोई सॉन्ग सुना तो ये क्या हो गया? प्लेजेंट साउंड. बट what is meant by unpleasant sound? Like a barking dog, vehicle, these are the unpleasant sound जो कि हमारे कान को अच्छे नहीं लगते सुनने के लिए, उन्हें हम कहेंगे अनप्लेजेंट साउंड. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट. जो अच्छा लगे वो प्लेजेंट, और जो सुनने के लिए अच्छा ना लगे, इट इज़ अ अनप्लेजेंट साउंड्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द नॉइज. So what is mean by noise? The loud voice, the unpleasant voice is called a noise. जो बहुत बड़ा आवाज़ है, जो अनप्लेजेंट साउंड है, उसको कहते हैं नॉइस. एंड नॉइस इज़ ऑल्सो डिस्टर्ब बाय अस. हमें वो क्या करता है? डिस्टर्ब करता है. टू मच नॉइस अगर हो गया तो वो हमें डिस्टर्ब करता है. सो दैट दिस इज़ द point of a noise. So our next point is the force. So force means what? Force means बल, ताकत. जो हम कोई भी काम करने के लिए बल यूज़ करते हैं, ताकत यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं फोर्स. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? फोर्स इज़ अ पुल और पुश. सो वी नीड टू अप्लाई अ फोर्स टू डू वर्क. हमें जो भी काम करना है, इसलिए हम क्या करेंगे? फोर्स यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ओपन द डोर टू योर रूम by pulling it and close it by the pushing. So it is used a force. Okay, for example, you are riding a bicycle at that time by pushing up pedals. So you are use force here also. So force is
used to the riding a bicycle. In this example, we see that the students stop the bicycle. हम्म, यहाँ पे एक स्टूडेंट है, वो बाइसिकल राइड कर रहा है, उसके आगे एक कुत्ता आ गया है, सो ही वांट्स टू स्टॉप बाइसिकल. सो इन दिस एग्जाम्पल द स्टूडेंट वांट्स टू स्टॉप बाइसिकल. सो यहाँ पे उसने ब्रेक लगाया है. एक स्टूडेंट है, उसकी साइकिल के आगे कुत्ता आ गया, वो ही वांट टू स्टॉप बाइसिकल. तो यहाँ पे इसने ब्रेक लगाने के लिए क्या यूज़ किया? एग्जैक्टली फोर्स यूज़ किया. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट चेंज द शेप ऑफ एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका साइज एंड शेप चेंज करना है. सो ये चेंज करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एग्जैक्टली फोर्स यूज़ करना पड़ेगा. अब यहाँ पे एक बॉल दिखाया गया है, एक बच्चा उस बॉल को पुश दबा रहा है. सो ये क्या हो रहा है? साइज चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है. सो when we use force, it change the shape and size of the object. So student, our next point is the friction. So what is mean by friction exactly? Actually, friction is a force that slow down or stop moving the object. So friction is developed between two bodies when they touch each other. अगर दो बॉडीज है वो एक दूसरे को टच हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है? फ्रिक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल, योर फीट एंड द रोड आर टच आर इन अ टच. सो व्हेन यू वॉक ऑन अ रोड, जब आप रोड पे चल रहे हो तो आपका फीट एंड रोड एक दूसरे को टच हो जाते हैं. सो इट इज सो दिस develop friction between your feet and the रोड. सो फ्रिक्शन इज हेल्प्स अस टू वॉक. तब क्या होता है? इन दोनों में फ्रिक्शन होता है और ये फ्रिक्शन आपको चलने के लिए हेल्प करता है. अंडरस्टैंड? सो दिस इज द टॉपिक light, sound and force. I hope you like it and understand it. So thank you so much, students.